Hello, welcome to my maths class. Students, when I started complex numbers, then I started with its introduction, like when we are not able to find out the solution of quadratic equation in real numbers, then we introduced at that time a new concept, new form of numbers, that is the complex numbers. And today I have taken this topic, quadratic equations solution, how we can solve the quadratic equations when the roots are not real, and that is given in your NCERT book also, one separate exercise 5.3. So like first question is given like this: x square plus 3 is equal to 0, means x square is equal to minus 3. अगर रियल रूट में हम देखते तो there was no real root possible, because square can't be negative in the real numbers, but it is possible. As now, after studying all the complex numbers, we know that it is possible in the complex numbers. So when we remove the square, then we take the square root and we take the positive and negative sign also here. So it becomes root 3 iota, because square root of minus 1 means iota. So root 3 I have written as it is, and square root of, because this square root of minus 3 means minus 1 into 3. Okay, square root of 3 I have written as it is, and square root of minus 1 I have taken as iota. So come to this this equation, then we solve it by using the quadratic formula. A is 2, B is 1 and C is 1. So we know that x is equal to minus b by plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a. By using the quadratic formula, it would become like this: 1 square minus 4 into a into c upon 2 into a is 2. So this is minus 1 plus minus, this is minus 7, because minus 8 plus 1 is minus 7 upon 4. So it would become minus 7 plus minus root 7 iota, because it is square root of minus 7. So square root of minus 1 becomes iota. So this is the root of the given quadratic equation, and it's not a real root, it's a, you can see it's complex number. अच्छा, वैसे तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं d कितना आया आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac आपने कैलकुलेट किया था, माइनस 7 आया था, लेस देन 0. 10th तक तो आपने यही किया था. इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट पॉसिबल. नो रियल रूट पॉसिबल है तभी उसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रूट निकला है. अगर यहाँ भी देखें तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, सॉरी, a इज माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x, c इज माइनस 2. और अगर हम d पहले ही कैलकुलेट कर लें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह माइनस 1, c की जगह माइनस 2. सो दिस इज 1, 4 2 ज़ा 8, लेकिन आपका नेगेटिव साइन इट्स कमिंग 3 टाइम्स, इट इज़ अगेन माइनस 7 विच इज़ लेस देन 0, एंड अगेन हेयर विल बी complex roots you will get. So x will be minus b plus minus square root d upon 2a. So x is equal to minus b, b is 1, so it is minus 1 plus minus square root d, d that you have already calculated, that is minus 7, 2 into this is minus 1. So x is equal to minus 1 plus minus root 7 iota upon minus 2. So finally it can be written by, if we multiply this numerator and denominator both by the negative signs, it would become plus 1, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा. इट डजेंट मैटर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, रूट 7 आयोटा, सो हम इसको प्लस माइनस ही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन 2. सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. And the students, all the questions of this exercise 5.3 are super simple. You would be able to solve all these yourself very easily. But I have taken 2 more questions from this exercise. Then we will try some extra questions, some difficult questions. Look here, in this a is root 3 and b is minus root 2 and c is equal to 3 root 3. So first of all, let us calculate d, that is b square minus 4ac. So d will be minus root 2 square minus 4, a is root 3, c is 3 root 3. So what does it become? Minus square of minus root 2 is 2, minus this is 4, 3 is 12 into root 3 is 3.
So this is 2 minus 36, that is minus 34. So now x is equal to minus b plus minus square root of d upon 2a. So that is b is minus root 2, so it would become minus of minus root 2 plus minus minus 34 upon 2a is root 3. So super simple, this is root 2 plus minus root 34 iota, and this is 2 root 3. It's done. Let us start now question number 9. So instead of taking it in fractions, so I will take the LCM of it, and it would become like root 2 x square plus root 2 x plus 1 equal to 0. So it would ultimately becomes root 2 x square plus root 2 x plus 1 equal to 0. Now a is your root 2, b is also root 2, and c is your 1. So now d becomes b square minus 4ac. b is root 2 square minus 4, a is root 2, and c is 1. So this is 2 minus a 4 root 2. Students, you can see here 4 root 2 is bigger than 2. So that's why the whole will be, this will be negative, because 2 is lesser than 4 root 2. Therefore 2 minus 4 root 2 is less than 0, means it's a negative. तो अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहूँ अंदर, तो मुझे नेगेटिव साइन आई नीड टू टेक आउट. सो इट बिकम्स 4 रूट 2 minus 2. So I have written it like this. Is it clear? So d is minus of 4 root 2 minus 2. Why I have taken this? Now this has become as positive number. Now x is equal to minus b plus minus square root of and one thing more, from here you can see 2 is also common. 2 we can take common, 2 root 2 minus 1 we can write further. So this is a d. d is your minus 2 square root bracket 2 root 2 minus 1. This x is equal to minus b plus minus square root d upon 2a. So what is b? b is your root 2. So this is root 2 upon 2 into a, that is again root 2. So students, from here this is minus root 2 plus minus this minus square root में if it is there is a minus sign, तो remove that and put the iota outside. So it becomes 2 into 2 root 2 minus 1 iota upon 2 root 2. Further I can simplify this. You can see here it is root 2 into this 2 into this, and both are under this square root symbol. थर्ड के अंदर है तो हम इन दोनों को अलग कर लेंगे. रूट 2 ये अलग हो गया, and this is further written separately like this. So it would become like this. From here and here root 2 is common, so take out this root 2 common. This is minus 1 plus minus, and this is 2 root 2 minus 1 iota upon 2 root 2, and this root 2 is cancelled. So x is now minus 1 plus minus 2 root 2 minus 1 iota upon 2. This is your final answer. Now students, I am going to take some extra questions. These are not from your NCERT book, but again these are, you can see these are the quadratic equations, and how we can solve these quadratic equations. देखो either by splitting the middle term, it's possible for this question. अगर आप middle term split करके करते हो या वैसे करते हो, in both ways it can be simplified. या फिर आप ऐसे करके a आपके पास 1 है, b कितना है -7 आयोटा, c कितना है आपके पास -12 है, तो आपके पास पहले d कैलकुलेट कर लीजिए. b स्क्वायर माइनस 4ac means -7 iota whole square minus 4, a is 1, c is -12. This is minus square to positive, 7 square 49, iota square minus this is plus 48, and this is minus 1 because minus 49 because iota square is -1. Iota square is equal to -1. So this is your -1.
So your d is equal to -1. Now what to do? X is equal to minus b plus minus square root d upon 2a. So it would become minus b. It means minus of minus 7 iota plus minus minus 1 upon 2a. So x would become, this is plus 7 iota, this is plus minus iota upon 2. तो आप एक बारी प्लस लेके करेंगे इसको और एक बारी माइनस लेके करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस लेके करेंगे तो 8 आयोटा अपॉन 2 यानी 4 आयोटा, और अगर माइनस लेके करेंगे 6 आयोटा अपॉन 2 देन 3 आयोटा. तो ये तो आपका इस मेथड से हो गया. बट इफ इट इज़ पॉसिबल टू स्प्लिट द मिडल टर्म देन यू कैन डू इट इन दैट वे. ठीक है, ये तो आपको पता है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस. लेकिन देयर आर सम केसेस वेयर द मिडल टर्म कैन बी स्प्लिटेड, देन इट बिकम्स लिटिल बिट शॉर्टर. सो वी कैन अप्लाई दैट मेथड ऑल्सो, एंड इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी मिडल टर्म कैन बी स्प्लिटेड. तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखिए इधर -7 है, -7 को यू आर टू स्प्लिट, ये आपका 3 प्लस 4 की फॉर्म में, एंड 3 4 जा 12 भी आते हैं आपके पास. माइनस है तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट इट. हाँ जी, तो अब इसमें ना वेन एवर देयर इज़ आयोटा हेयर, सो वी नीड टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो. इसमें क्या है, ये -12 है तो -12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा. आयोटा स्क्वायर ही इटसेल्फ इट इज़ नेगेटिव. अब आप क्या कीजिए, इसमें से यहाँ से x कॉमन है और यहाँ से माइनस कॉमन, 4 कॉमन, आयोटा कॉमन, तो x - 3 आयोटा. सो x - 4 आयोटा, x - 3 आयोटा equal to 0, तो x is equal to 4 iota, x is equal to 3 iota. It can be done in this way also, but the previous method you are familiar with that method, so that is easy for you people, but that's lengthy method and it is little bit shorter than that. And now look here how to do it. It is x square plus, it is already splitted actually, 1x and minus 2x iota minus 2 iota equal to 0. From here what is common? X, so x plus 1. From here what is common? Minus 2 iota common, x plus 1 equal to 0. So this is x minus 2 iota, x plus 1 equal to 0. So this implies x is equal to 2 iota या फिर x is equal to minus 1. And the students, in this question x square minus 3 root 3 iota x minus 6 is equal to 0. It's a given, it's a quadratic equation. So very simple method is to apply the quadratic formula and solve it. ठीक है, बजाय इसके कि हम इसको +6 iota square लिखें और फिर that is a very complicated method. So directly do it by applying the quadratic formula. इसमें a b c, a x square का कोफिशिएंट, b जो है वो x का कोफिशिएंट -3 root 3 iota and c is -6. Simplify b square minus 4ac. Okay, and that is -3. So x की वैल्यू -b plus minus square root d upon 2a. Put the values and we have got it. Now square root of -3 means root 3 iota. Okay, so now once we will take plus and the other time we will take माइनस साइन. प्लस लेंगे तो 3 + 1 4 रूट 3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा. माइनस लेंगे तो 3 - 1 2 रूट 2 आयोटा बाई 2 हो जाएगा. सो वी हैव गॉट 2 आंसर्स, 2 रूट 3 आयोटा एंड 1 रूट 2 आयोटा. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. हाउ कैन वी सॉल्व इट? इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा. लुक हियर, 1 + 4 का सम 5 है, ऐसे ही 2 + 3 का सम भी 5 है. तो आई एम गोइंग टू राइट दीज टू फैक्टर्स टुगेदर, x + 1 एंड x + 4. और ये जो दो फैक्टर है x + 2 एंड x + 3 आई एम गोइंग टू राइट टुगेदर. नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड देन multiply these two separately. So this is x square plus 5x plus 4 and it would become x square plus 5x plus 6. Okay, now x square plus 5x and x square plus 5x, यही मुझे सेम लेके आना था. तभी मैंने देखा था कि किसका सम सेम आ रहा है. That's why I have taken both these factors together. तो अब इसके बाद पुट कर देंगे हम x square plus 5x को y. This is my y.
ओके, सो नाउ सब्सटीट्यूशन के बाद यहाँ पर हो गया y प्लस 4 एंड इट हैज़ बिकम y प्लस 6. दिस इज y प्लस 4 एंड दिस इज y प्लस 6 equal to 0. Now if you multiply these two, you will get this is equal to this y square, this is 4 plus 6 10x and 4 6 24. Now you are to simplify it by using the quadratic formula. हाँ जी students, now this question I have substituted x square plus 5x is equal to y. सो यहाँ पर y प्लस 4 हो गया, ये y प्लस 6 हो गया इक्वल टू 0. अब इसके बाद आई हैव सिंप्लीफाइड इट, यहाँ पर d निकाला, सिंप्लीफाई किया इसको, और उसके बाद मेरे पास y की दो वैल्यूज़ -4 एंड -6 आ गई. अब y क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 5x, यानी x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -4 and x square plus 5x is equal to -6. And I have simplified, I have received these values, x is equal to -1, x is equal to -4. And here x is equal to -2 and x is equal to -3. By splitting the middle term I have done it. ये तो था that you might have done in your previous class also, in your 10th class. देखिए यहाँ पर because it was a biquadratic equation, so it was clear कि भाई you will get 4 solutions. आपके पास 4 रूट्स आएंगे यहाँ पर, तो वो 4 रूट्स तो हमारे पास आ ही गए हैं. लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ होगा. अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर आप इसको 120 कर देते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी है बुक में, तो 120 होते ही अब आपका C चेंज हो जाएगा. बिकॉज व्हेन इट विल गो टू दिस साइड, तो आपका ये 24 माइनस 120 कितना होगा आपका ये 96 -96 बन गया. ये बना -96. ओके, C हो गया -96. तो b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी बन गया -96. अब ये इसका बन गया ये माइनस माइनस क्या बना ये प्लस. हाँ जी, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, 384 आया, माइनस माइनस था तो प्लस ये 484 आ गया. दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 22. ओके, y क्या है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d ऑन 2a. d की वैल्यू 484 जो कि होता है 22. सिंप्लीफाई किया, एक बारी प्लस से तो 6 आया, एक बारी माइनस से तो 16 आया. 6 को लेके हमने y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x पुट किया इक्वल टू 6. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो आपका x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -6 आया है. अब दूसरी साइड ये है आपका -16, यानी कि इधर ले लेते हैं हम इसको, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -16. व्हाट डज इट मीन? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इक्वल टू 0. नाउ middle term splitting is not possible here, so again I am taking a 1 b 5 and c is equal to 16. So now d is equal to b square minus 4ac. So b square means 25, 5 का square minus 4, a is 1, c is 16. So this is 64, this is 64 and this is minus 39. This is minus 39. So now x is equal to minus b plus minus square root d upon 2a. So x would be, b is minus 5 plus minus -39 upon 2. A is your 1 means 2 into 1 is 1. So it is minus 5 plus minus root 39 iota upon, because it was minus 39, so I have written 39 iota upon 2. So these are two roots. Once we will take with positive, the other time we will take with the negative, and the remaining two roots are these. And students, I have taken one more tricky questions in this question. It is x into x plus 1 whole square, x plus 2 equal to 72 and we are to solve it. So I am taking it like this. देखो ये तो आपकी क्वाड्रेटिक है ही क्योंकि होल स्क्वायर है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ. x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 72. अब इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x एंड आई एम ओपनिंग दिस ऑल्सो. दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 72. अब यहाँ देखिए ये x स्क्वायर प्लस 2x है, ये भी x स्क्वायर प्लस 2x है, तो वी कैन पुट x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y. तो आप क्या करेंगे? पुट x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y. तो जब आपने ये सब्सटीट्यूशन किया देन इट बिकम्स y, ये y बन गया, ये भी y प्लस 1. So this is y plus 1 is equal to 72. So this is y square plus y
and minus 72 equal to 0. And if you factorize it, then you can see here it can be easily factorized by splitting the middle term by this is 8y minus 9y minus 8y, because here it is positive तो बिगर नंबर के साथ पॉजिटिव ही आएगा. 9y minus 8y minus 72 equal to 0. y is common, y plus 9 minus 8 common, y plus 9 equal to 0. So this is y minus 8 and y plus 9 equal to 0. So what does it mean? Y is equal to 8 या फिर y is equal to minus 9. Y is your x square plus 2x is equal to 8, means x square plus 2x minus 8 is equal to 0, and here it is x square plus 2x is equal to minus 9. It means x square plus 2x plus 9 is equal to 0. Now you can further simplify both of these quadratic equations by using the quadratic formula. Complete it yourself. Now students, you are to solve this question yourself. It will be done in the same manner as we have done last two questions. Let me tell you the answers of these two. This question answer will be x is equal to either 3 or 2, or it would be 5 plus minus iota root 3 by 2, and now you are to try it yourself. Now students, I have taken extremely different question. Look here how we'll solve it, how we'll find out the values of x for this question. So here first of all I am writing these two terms together. 4x raised to power 4. This is a unique question here in this total entirely. You can see exercise minus 4x cube minus 4x I am taking together, and minus 7x raised to x square I am taking separately. From here and here, actually I want to remove this x square throughout, तो मैं x square यहाँ से भी कॉमन लूँगी, x square यहाँ इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन लूँगी, तो देखते हैं क्या बचता है. तो here it is okay. From here, if I am taking x square common, so it remains 4x square. Rather 4x square I am taking common, तो x square it would remain. यहाँ तो x square था नहीं, लेकिन आपने common लिया तो ये 1 upon x square आ गया, है ना. From here I am taking minus 4x square, as I told you, because I want to get rid of this x square. So that's why I am taking x square common, and I want to convert it into the form of a quadratic. So this is now 4x square is common, so what is left here? X, and minus is common, so plus, and here it is because x square is common, but here it was only x, so it would be 1 upon x, minus 7x square equal to 0. From here you can see x square is common, so x square is common, so what is left here? 4 x square plus 1 upon x square. This is a unique question, you can say, and this is x plus 1 upon x, and this is minus 7 equal to 0. So x square is equal to 0 means x is equal to 0. One of the solution you have taken out x square is equal to 0, या फिर ये सारा 0. तो इससे आपके पास दो रूट्स आ गए 0 0. अब बाकी जो बचा वो ये है, ये आपके पास क्या है? 4 x square plus 1 by x square minus 4 x plus 1 by x minus 7 is equal to 0. Now you are to put this as equal to y. X plus 1 upon x is equal to y. Taking square on both sides, squaring both sides, so it becomes x plus 1 upon x whole square equal to y square. So this is x square plus 1 upon x square plus 2 into x into 1 upon x. A plus b whole square means a square plus b square, 2 into a into b is equal to y square. So it becomes x square plus 1 upon x square. This is 2, and when it will shift to this side it becomes like this. तो आप x square plus 1 upon x square की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे y square minus 2. So it is 4 y square minus 2 minus 4. What is this? This is y, and this is minus 7 equal to 0. So this is 4y square minus 8 minus 4y minus 7 is equal to 0. So it becomes 4y square minus 4y minus 15 equal to 0. And now if you solve it,
After this, look here, then it is -4 and if we multiply this a and c then this is 60. अगर आप इसको quadratic formula से solve करना चाहते हैं then you can solve it by using that. I have split it, I have solved it by using the middle term, splitting the middle term. तो middle term split किया मैंने -10y plus 6y because 10 into 6 is 60 और -10 plus 6 is -4. तो ये आपके पास दो आंसर्स आए हैं, y इज इक्वल टू -3/2 एंड y इज इक्वल टू 5/2. बट व्हाट वाज द y क्या था, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था, ये आपका x प्लस 1/x था, दैट इज -3/2. इट मीन्स x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -3/2. सो दिस इज 2x² प्लस 2 -3x means 2x² plus 3x plus 2 equal to 0. Likewise here y is a 1, x plus 1/x is equal to 5/2. Similarly you can solve, you will get two quadratic equations and further you can simplify it by using the quadratic formula to find the roots of this quadratic equations and you can do it yourself. Let me tell you what will be the final answers of these two quadratic equations. Means what will be the final answer, you can write it, you can note down it. Final answer is 1/2 2 -3 plus minus iota root 7/4. 1 2 3 with positive and 4th with the negative sign. हाँ जी, this question, in this question you have to find the value of 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus 41 if you have been given x is equal to -2 minus root 3 iota. यानी इसको यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक क्वेश्चन यू कैन सी हेयर. तो इसमें क्या करना है, वट एवर इज गिवन टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट x इज इक्वल टू -2 minus root 3 iota. Then it becomes x plus 2 is equal to minus root 3 iota. Squaring both sides, so it would become x plus 2 whole square is equal to minus root 3 iota whole square. So this is a square plus b square plus 2ab and here on this side -1 square is positive, root 3 square is 3 iota square. So it becomes x square plus 4x plus 4 and this is -3. This is -3 because iota square is minus. So when this minus come to this side this becomes like this. So x square plus 4x plus 7 equal to 0. ये आप देख लीजिए. अब इसको कैसे करें, अब देखिए इसको क्या करते हैं हम. We will divide our given equation by this expression. This is number 1. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2x raised to power 4 plus 5x cube, 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus 41 को आपने डिवाइड किया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 से. यहाँ 2x स्क्वायर आएगा पहले. दिस इज 2x 4 to the 8x cube, 2 7 the 14x square, subtract this. So this is minus 3x cube minus 7x square minus x. So this is now minus 3x cube. So to get minus 3x cube I will multiply this with minus 3x. So this is minus 3x cube when it is multiplied with this, minus 3x into plus 4x minus 12x square minus 3x multiplied with plus 7 minus 12x. Change the sign. This is 5x square plus this is 9x, sorry this is 11x and plus 41. Let me check the question once again. What is this question? Minus x plus 41. Okay, now you can see here it is 5x square and here it is only x square. So 5x square and this is 5 4 is 20x and I think there is some error in the question. Let me check. There is some error in the question. हाँ जी, ये गलती हुई. 5 ये यहाँ पर होना था आपका 3 7 21 जिसको कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 7 21 था. तो ये आपका आया प्लस 20. हाँ, तो ये आपके पास है नाउ 5 4 20x 5 7 35. Subtract it. It is cancelled. You are left with only plus 6 you are left with.
तो अब अगर मैं ये देखो कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आपको पता है ना कैसे लिखते हैं। डिवाइड, आपका जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखते हो ना आप, छोटी क्लास से आपने देखा है। तो हमारा डिवाइजर क्या था, डिविडेंड क्या था, डिविडेंड ये है, तो डिविडेंड है आपका 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर ये रहा, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इनटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट इज दिस इज 2x स्क्वायर, इसको यही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज योर 6। अब आपको पता है कि बाय 1 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 0 के इक्वल है, यानी ये तो 0 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 इक्वल टू, ये तो हो गया 0, 0 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस दिस रिमाइंडर, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, सो दिस इज 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 is equal to 0 plus 6, so it is ultimately equal to 6. This is your answer. हाँ जी स्टूडेंट्स, now the last question of today's lecture is this, you are to solve it. तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ABC क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं, x स्क्वायर कोफिशिएंट आयोटा, b इज माइनस 4x कोफिशिएंट, c इज कांस्टेंट माइनस 4 आयोटा। तो आप d कैलकुलेट कर लीजिए पहले, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, 4a है आयोटा, c है माइनस 4 आयोटा, तो 4 16, दिस इज माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर क्या बनता है बेटा माइनस 16, d हो गया 0। तो आपका आंसर जो आया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a, बिकॉज d इज 0 तो माइनस b अपॉन 2a, बिकॉज d इज योर 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। So this is minus b, यानी minus of minus 4 upon 2 into iota. So it becomes x is equal to 4 upon 2 iota. Because in the standard form we would never like to have our iota in the denominator. So we will rationalize it. तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 upon iota, rationalize it. So it becomes 2 iota upon iota square. So x is equal to minus 2 iota. This is our solution. Students, as you know, in the quadratic equation 2 solutions are required because it's coming only one, so it means there are 2 same roots. तो हमारा आंसर होगा कि x is equal to minus 2 iota and minus 2 iota, 2 roots are same here. And with this question, this lecture is over.